Today I'll be talking about अल्कोहल एडिक्शन। ये जो एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन, ये बहुत कॉमन है इन आवर सोसाइटी and it produces many problems in our society, in our family, like domestic violence, financial problem, and children also they learn to take alcohol during their childhood. सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, बहुत सारे फैमिली बर्बाद हो जाता है। ये एक डिजीज है। पहले शुरू तो होता है सोशल ड्रिंकिंग से, मतलब फ्रेंड के साथ ड्रिंक करना, वीकेंड में ड्रिंक करना, उसके बाद एक तरह का आदत बन जाता है। उसके बाद जो होता है, अमाउंट ऑफ अल्कोहल बढ़ने लगता है। दिन में भी लेते हैं, इवन ब्रेकफास्ट करते हैं अल्कोहल से, तो तब तक तो ये डिजीज बन जाता है। अदरवाइज ये ब्रेन को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है, बहुत सारा अदर ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो पर्सन का जो लाइफ है वो कम हो जाता है। रेमेडीज आर अवेलेबल एंड वेरी इजीली वी कैन deal with this problem, but the problem is the person doesn't want to come because he is under the influence of alcohol. So the persons who are not dependent on alcohol, that means other family members, they should support the person. They should bring the person to the doctor, to the psychiatrist, so that we can help the person with medicine and therapy. The person becomes selfish. Generally, it happens when the person becomes dependent. Alcohol is controlling that person. Person doesn't know anything. A family is not important for him. Only alcohol is important. In that case, the person can do some crimes also to get the money to buy alcohol. So in that case, I think family members should admit the patient in a hospital or de-addiction center. There, alcohol will be stopped by the doctors, and if he faces any physical problem, medicines will be given to control those physical problems, and within few days he'll be alcohol free. Yeah.